The movie succeeded in depicting what is the brainwashing system existing all over the world, not only in Kerala, but all over the world. लेंगे ना And इनको it ना। is succeeded in ये खड़ा हो गया है, depicting तुम बोलो ना ऐसे। what is love trap jihadis. And the movie got succeeded in depicting what the recruiting system existing in our country, which is recruiting the people towards ISIS like terrorist groups. And the movie got success in showing what the problem is and what the solution is. प्रॉब्लम क्या था? शालिनी उन्नीकृष्ण का और गीतांजलि का प्रॉब्लम धर्म सिखाए गए नहीं है और चरित्र के बारे में कुछ भी नहीं सिखाए गए हैं. They were not knowing what is happening in and around of both, and they could easily the entire team of Kerala story. मैं जो भी बोलूँगा, पहली बात तो ये है कि मुझे ये लगता है कि ये लड़कियां जो हैं, इन्होंने इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी आज इतनी हिम्मत के साथ ज़िंदगी का सामना कर रही हैं. आज भी कुछ लड़कियों को अपना मुंह ढकना पड़ रहा है क्योंकि थ्रेट अभी भी उनके साथ जुड़ा हुआ है. वो अभी भी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी रही हैं. वो अभी भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना हर रोज़ करना पड़ रहा है. तो हम इस फिल्म को लेके अगर हम पे सवाल उठाने कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, पर इन लड़कियों के पेन को हम हर जगह ले जाएं. और हम इस देश के हर फैमिली को फिर एक बार कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी, आप देखिए. पायरेटेड कॉपी देख के खुश मत हो जाइए, थिएटर में जाके देखिए. इन लड़कियों के लिए इतना तो हम पूरा देश मिलकर कर ही सकता है. और हमें एजेंडा, प्रोपेगेंडा, पता नहीं जो आप कहना चाहें कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें पता है कि हमने कितनी ईमानदारी और कितनी सच्चाई से ये फिल्म बनाई है और हम उसी सच्चाई के साथ आज इन लड़कियों के साथ खड़े हैं. और मुझे लगता है फिर कोई खड़ा होकर बोलेगा ये भी हमारा एक प्रोपेगेंडा था टू क्रिएट सम काइंड ऑफ इमोशनल सिंपैथी. सो मोस्ट वेलकम. जिसको जो लिखना है वो लिख सकते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन जिन्हें इन लड़कियों का पेन रियलाइज होता है, मुझे लगता है आप सब में से बहुत सारे लोगों के दिलों को इन लड़कियों की बातों ने छुआ है. तो इनके कॉज को बड़ा बताइए. फिल्म को आप जितना गालियां देना चाहे दे दीजिए, लेकिन इनका कॉज ना मरे, इनका कॉज बड़ा हो और देश इस कॉज को भूले नहीं. ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है. इतना ही कहना चाहेंगे. थैंक यू वेरी वेरी मच. आप लोग सब यहाँ आए और हमारी इतने लंबे लंबे जवाब भी आपने बहुत शांति से सुने. थैंक यू सो मच. Thank you very much for doing it, ladies and gentlemen. We'd like to thank you very much. You've been an absolute suicide bombers और sex slaves, उनको ऐसे ही वो रेगिस्तान में वो मर जाते हैं because they won't be of any use. So then I think अब जब हम लोगों को कोई नंबर पूछता है and जैसे हमारी फिल्म में एक सीन है नीमा मैथ्यूज का, जो वो अपना केस रजिस्टर करने जा रही है. She's been raped by 15 to 20 people every day and they ask her proof. अभी किसी ने आपको 15 लोगों ने आपको रेप किया, आई डोंट नो, प्रूफ कैसे दोगे आप? हाउ डू यू गिव प्रूफ दैट यू हैव बीन रेप्ड कंटिन्यूअसली फॉर अ मंथ बाय 15 पीपल पर डे? थोड़ा मुश्किल होगा वो. शालिनी के साथ प्यार में धोखा हुआ, तो अगर प्यार में धोखा हुआ है तो वो केस कैसे रजिस्टर किया जाता है कि किसी ने प्यार में मुझे धोखा दिया? आई डोंट नो कैसे रजिस्टर किया जाता है. क्या वो काउंटेड नहीं होता? क्या रेप काउंटेड नहीं होता बिकॉज हम लोग लिख के नहीं प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ ये पोजीशन में ये लड़के ने ये किया और वो लड़के ने उसके बाद तुरंत वो किया? कैसे लिखा जा सकता है और कैसे कंप्लेन? हाउ डज वन टेल समबडी दैट दिस इज द प्रूफ? आई डोंट नो. सो इतने सारे सवाल. एंड व्हेन आई मेट ऑल ऑफ दीज गर्ल्स आई सॉ कितने स्ट्रॉन्ग है ये, बिकॉज आई वाज आस्क्ड दीज क्वेश्चंस नाउ जब भी मैं प्रमोट कर रही थी अपनी फिल्म को. एंड मैं एक एक्टर हूँ एंड मैं एक लड़की हूँ. आई कुड फील देयर पेन एज अ गर्ल, बट द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड टू मी, सम ऑफ देम हैज टू बी लाइक, हाउ कैन यू आस्क दिस? आई मीन, आप देख रहे हो लाइक देयर इज अ सीन वेयर सच ग्राफिक वायलेंस हो रहा है, बट you've seen
are you sure about the number? Can you prove the rape, how it happened? You know, so I'm sure these girls really need a huge hand of applause for coming here and sitting here in front of you guys and being able to tell you their stories, knowing that they will be judged, knowing that they will be nitpicked, knowing that they will be asked questions that are questions that are degrading, questions that are to make them feel really small, to make them feel like they're inconsequential. Because when you go through something like rape, and when you go through something like indoctrination, and when someone's messed with your mind, stripped you of your self-confidence, and then when someone makes you feel really small, they've still come here knowing that anyone could ask them anything, knowing that. So, yeah, to be part of this project is, I think we are all very, very fortunate that Vipul sir and Sudipta sir gave us this opportunity. Okay, ladies and gentlemen, we've had the ladies speak. It's a film about the ladies. I think on that wonderful. By God's grace or my family's prayers, I was able to come to Ashravidya Samajam and meet Acharya ji. And as Vishali ji said, the ideology which I was carrying in my head for the 6 long years, he proved me, Acharya ji proved me to be false within just 3 hours. It is the only through our course, Adhyatmika Shastram course. So I must say that I was escaped just because my parents' prayers or whatever it is. But what the film showed, what strategy they try to expose in front of public is real. Please don't say that it is some agenda or what. You are playing actually with thousands of girls' lives. Please do believe that. After coming to Ashravidya Samajam, I also met so many cases, and you asked how they are becoming anti-nation, right? Some of the students from US came to us, and he was highly radicalized in this ideology, and he was asking his Pakistani and Afghanistani friends that when are you coming to attack India? Why are you not demolishing the temples in India? Is this anti-nation or what? Is this anti-human or what? Actually, I am not saying that all Muslims are wrong or all Hindus are right or all Christians are wrong. I am not at all saying that. But this ideology surely, definitely contains some of the verses or that makes anti-human or anti-national. And we must say that a strong caucus is functioning all over the world to convert people, to radicalize them, to recruit them to this ISIS terror or any other terrorist groups. And it is a fact. And this film is actually, I must bow down before you because you have been that much sincere to that topic. And I couldn't, because of them only I could come back to my dharma. And so many, regardless of how many threats or whatever crisis we are facing, some of them in this society, we are ready to even give or surrender our lives for saving our sisters, daughters, all them, not only girls, all them. We are ready, and once of all, thank you everyone. Thank you very much. Thank you to Dr. Anubhav for that very powerful sharing. I just want to say one thing. She became very emotional. A lot of girls here have become very emotional. They are not used to speaking in front of media. So please use your discretion when you use this speech. Because I know that even, this speech can be misinterpreted. This speech can also be labeled as agenda or whatever. So please use your discretion, and she's just poured her heart out, and you can see so many other girls are getting emotional. So please. Vipulji, I've been waiting for a long time.
Vipulji, my name is Bella. I'm from the Times of India newspaper. I have just one question for you. Even if we take your film at face value, we do not ask for numbers, we do not make a controversy whether it is 3 or 32,000. Does it please you somewhere in the core of your heart that you have the response दिख रहे हैं लोगों का? What is a different mindset that you four carry after a particular Kerala story? उसको भी वो भी दूसरा उसका भी कुछ हुआ है। The first time I read this script, it was we didn't know. Honestly, I didn't know this was happening. And the whole process, when we were doing workshops and we were doing stories and we were watching documentaries. नहीं कहाँ थे अभी तक? अपनी नॉर्मल लाइफ से जो मोह होता है ना वो चला जाए, बिकॉज व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, व्हाट द पेन दैट दे हैव फेल्ट, आई थिंक वी जस्ट wanted to dedicate all our energy so that when they watch this film we do justice to it. That is all we wanted to do through this film. जैसे विपुल सर ने कहा, हम स्टार्ट में जब ये स्टोरी के बारे में पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तब सब अगर चाहते तो उतना बिजनेस हो चुका है कि आज ये सब करने का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इतना अटैच हैं उस प्रोजेक्ट से, वी फील सो मच अबाउट द प्रोजेक्ट कि आज भी हम लोग यहाँ पर हैं। और जैसा आपने पूछा कि पढ़ने के बाद आई थिंक वी आर ऑल डिफरेंट पर्सन नाउ, ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम डे वन पे जब प्रोजेक्ट पे थे तब बहुत एक्टर का भी फीलिंग थी, पर आज हम पर्सनली बहुत जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट के सब लोगों के साथ। मेरे लिए ये मेरी पहली हिंदी पिक्चर है और ये एक सब्जेक्ट है जो एक एज एन एक्टर, एज अ प्रोफेशनल मैं बताना चाहूँगी कि वो स्टीरियोटिपिकल सब्जेक्ट नहीं है, हीरो हीरोइन वैसा जो हम सोचते हैं, जिसका ड्रीम रहता है कि अरे मैं पिक्चर करूँगी तो ऐसी पिक्चर करूँगी, इसके साथ करूँगी। मगर लाइफ में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जहाँ ये आपसे भी एक बड़ी चीज़ है। ऐसा मौका है कि ये जो स्टोरी है वो हम चारों या जितने भी कास्ट मेंबर हैं उनके थ्रू हर एक लड़की को पहुंचे जो शायद इस चीज़ से गुजर रही है या गुजर चुकी हो, और उसकी अगर मदद हो सके एक भी लड़की की तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी जीत है। सेकेंडली, मैं कल अपनी नानी के साथ ये पिक्चर देखने गई थी और मेरी नानी गुजराती है, ज़्यादा हिंदी समझती नहीं है। उन्होंने बाहर आके मुझे एक बात बोली कि मुझे वो तेरा सीन बहुत सही लगा जब तूने आके अपने पापा को बताया कि आपने तो हमें कभी कुछ सिखाया ही नहीं है, जो कि मैं मानती हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा सच बात है। क्योंकि आज भी मैं अपनी नानी को पूछती हूँ कि ऐसा क्यों है, ये क्यों होता है, हम मंडे को क्यों व्रत रखते हैं, हम ट्यूसडे क्यों व्रत रखते हैं। वो बोलती है बस ऐसा ही है, मेरे टाइम से उनके पापा दादा सबके टाइम से यही चला जा रहा है। तो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो कि इस पिक्चर से मुझे रियलाइज हुआ है। और एक चीज़, एक मुस्लिम लेडी आई थी कल मेरे पास, पिक्चर देखने आई थी, और आगे उन्होंने मेरा हाथ शेक किया, मुझे बहुत टाइट हग किया और मुझे बोला थैंक यू कि आपने ये पिक्चर दिखाई है, क्योंकि ये पिक्चर इस्लाम को गलत नहीं बता रहा है, बट ये बता रहा है कि कुछ लोग इस्लाम को यूज़ करके उसका कितना गलत फ़ायदा उठा रहे हैं टेररिज्म के लिए। और मैं मानती हूँ कि टेररिज्म का कोई भी रिलीजन नहीं होता। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी मैं, कन्वर्जन्स के बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, हम कन्वर्जन अगर करते हैं हिंदू में या सिख में या क्रिश्चियनिटी में, पॉइंट कन्वर्जन का नहीं है। ऐसा कहाँ होता है कि ISIS और टेररिज्म का पार्ट कर जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता और किसी कन्वर्जन में, क्योंकि इस फिल्म के ड्यूरेशन में ऑफकोर्स लाइक आई सेड आपको भी अपना थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। आई वॉज रिसर्चिंग, कन्वर्जन हिंदुइज्म में भी बहुत हुए हैं केरला में, लेकिन पॉइंट वहाँ पे आ रहा है कि कन्वर्ट करके आप किसी टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट बना रहे हो, ISIS का पार्ट बना रहे हो, दैट इज देयर दे आर आई फील। Do you think there should be an anti-conversion law? Great answer. Before we started the film, सुदीप्तो सर ने मुझे एक वीडियो दिखाया था जहाँ पे And
not only to my parents, even to my cousin sister's child. When at that time she was just 4, while the azan was given, I couldn't perform namas at time, and she was keep on coming to me and say, "Come, let's play, let's play." I got very angry and I pushed her down. Just see, she's just 4. She's not even knowing what I am going. For about 5 years, I studied Islam, and at 2020, I was actually living like a Muslim woman. And at that time, you can just imagine, I was from a practicing Hindu family, and puja and all are going on in my home. At that time, in upstairs, I am doing namas, and my parents couldn't tolerate what I am doing. They can't even stop me, but what to say? I am asking them questions and they can't answer any of them. So they couldn't stop me from anything. They could only do one thing, was cry and say that please don't go away. And at last day, my father and mother, I am not at all exaggerating, it was what I have gone through. My father and mother came to me and fell into my feet and said that please don't go away. If you go away, we will commit suicide. No other options left between us. So the one who gave to birth me, the one who loved me, the one who cared for me, I told these questions, what I faced from my friends, and they told me that just because our forefathers are doing all this, we are following the same. It was obviously not convincing to me. I started searching in social medias also, but there also I couldn't get any convincing answers, because many explanations to shlokas, etc., are given. But what a common man has doubts, it was not given by any of the scholars, or I couldn't get from any sources. So slowly, as depicted in the film itself, slowly Shalini started to ask questions. Okay, if this is wrong, then what is right? They make us to ask like that. And slowly I started asking, okay, then what is right? And they started to say that Allah is the only God. No others should be worshipped other than Allah. If you worship anybody rather than Allah, you will be put in hell. The first thing they will present, they are presenting their ideology in such a way that it is the best and it is the only truth. And slowly I started asking more questions, and when they notice that we are interested, they will give more books, that is Quran translations, that is called tafsir. And also they started to share videos of Zakir Naik and MM Akbar and all. And actually these videos of those people made me actually radicalized. I was radicalized to that ideology, because I slowly, gradually, my brain was fed up with this radicalized ideology. I was becoming a dangerous girl, I must say, because Hi everyone. First of all, hats off to the entire crew, because you have done such an awesome job. This film is actually closely related to my life and to my heart. I'm Dr. Anaka. I'm coming from Thrissur, Kerala. I'm a physiotherapist by profession and full-time worker of Arsha Vidya Samajam. Before 2 years, I too went through a stage of conversion. And like Shalini Unnikrishnan, that character, my life was also changed upside down during my hostel days. Even though I was born and brought up in a practicing Hindu family, I was not at all aware about why I am doing all these things, or I was unaware about my dharma. And when I went for my higher studies
I left home and joined in Ernakulam in a college, and I stayed in a hostel there. And like Asifa, I too had many roommates. The conversion strategy, what shown in the film, is exact, not a bit exaggeration. I must say that it is exact because they themselves create a situation and slowly inject or slowly started to say about their religion. Between the normal conversations itself, between us, religion came a topic and they started us questioning. Just like whatever you are asking. Actually, after seeing the film, I was really angry with you because you have acted so much best, okay? Just like that strategy means first they will ask questions, they will put you in confusion, and at that confused state, they will start criticizing our religion, that is our gods. The same exact questions, why are you having this much gods, why are you praying to a stone, so much questions they keep on asking, and because of we are unaware about why we are following all these things, or I was unaware about my dharma, so I couldn't answer any of those questions, and like Shalini Krishnan kept silent, I also kept silent. And after noticing, I felt that somewhere I am a degrading thought came to me that why I am not knowing these things, so I have to search on. So students of Ambalapura, all this is related to Kerala. Anila, Veni, Julie, students of Ambalapura Model Higher Secondary School. Vrinda, Papanisheri, Kannur. We have at least 18 such cases of reported suspicious deaths linked with love jihad and other killings. I have a question. Ma'am, we'll give you a mic. We'll give you a mic. माइक दे दो भाई, माइक दे दे यार. Just a moment. We'll give you a mic. Hello. Yeah, hi. This is Runa from Webinea. Director साहब, I will definitely say 32,000 या 25 या 30,000 मायने नहीं रखता है, मायने क्राइम रखता है. जो उन 3 या 4 लड़कियों के साथ हुआ है वो भी क्राइम है, और नंबर्स डेफिनेटली डज नॉट डिसाइड कि क्राइम की ग्रेविटी क्या होगी. यहाँ पर मैं आपके साथ ही श्रुति या चित्रा जो भी जवाब देना चाहें. आप चूँकि पढ़ाई के जरिए लोगों को वापस सनातन धर्म या अपने किसी और धर्म में लाने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या पढ़ाया जाता है और क्या दिखाया जाता है कि क्या सही है और गलत है? Hello. Yeah. See, when a person who has been radicalized or brainwashed into a certain ideology is brought to our institution, they are in a particular mindset that they are not even willing to converse with us. If you tell them, if you try to tell them morals, or if you try to tell them something about good values or something, they're not willing to listen. They say, I don't want to listen to something related to Hindu Dharma. I do not want you to quote from Vedas. I do not want you to want to hear anything from the Bhagavad Gita. I on the IS. The most recent is that of a news disclosed by the Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan himself. It was about Praju, who converted as Muhammad Amin. This is a news from Balusheri. I am just quoting the news. Praju's wife, a native of Balusheri, learnt about the whereabouts of her husband who fled 8 years ago after Chief Minister Pinarayi Vijayan's statement in a press conference. Pinarayi Vijayan, who was speaking in the context of narcotic jihad, had revealed that Praju, a resident of Turutyar, Balusheri, was included in the list of Malayalis who joined the IS. Praju, Muhammad Amin, who is also accused in the Kinalur Mangayam Amina Umma murder case, fled the country after causing a huge financial burden on his wife and family. The wife says that it is no surprise that he has joined a terrorist organization because he would do anything for money. He has married 4 times. Praju converted to Islam 3 years before marrying her. The young woman revealed that the man who had strong religious beliefs had forced her, a Sunni believer, to be radical in her beliefs and told her that if she did so, she would get money as she wished. In 2009, Amina Umma, an elderly woman, was murdered by living alone in her house in Mangayam, Variamala. Due to lack of evidence, the court acquitted Praju and another accused, that is in the murder case, due
lack of evidence. Goes into a different ideology or state of mind due to a certain particular ideology, that their pattern of interactions with their family, pattern of interactions with their close ones had changed so much that they had become averse to their own families. They wanted to leave their families, they wanted to disassociate from their friends and near and dear ones, and wanted to, they were inclined or sympathizing with the anti-national or anti-human trend, which is what the parents or their close relatives noticed, and that was when they intervened and they brought them to Asha Vidya Samajam, where we were able to debate with them based on, we were able to give them counseling, intellectual, ideological counseling, and bring them back. So if you ask for records, 7,000 people we have. And yet we all have done it with all our intensity, with all our integrity and with truth. And that's what matters at the end of the day for all of us. So today we are in a very happy state that at least the nation is talking about this subject, this topic. Forget about Kerala's story. It will come, it will go. This topic should not go. This topic should remain in the center of the nation's conversation. That is it. शोले में गब्बर सिंह विलन है ना, तो सिंह कम्युनिटी के अगेंस्ट तो नहीं है रमेश सिप्पी साहब। हर फिल्म कुछ बुरे लोगों की बात करती है, और जब कोई भी फिल्म कुछ बुरे लोगों की बात करती है तो हम हर वक्त तो उसे किसी रिलीजन से नहीं जोड़ देते। सिंघम 2 में तो एक प्रीस्ट है विलन, तो क्या हिंदू सारे संत समाज को विलन कहने की कोशिश की गई है? बिल्कुल नहीं, वो एक कैरेक्टर है। हमारी फिल्म में कुछ कैरेक्टर हैं जो टेररिस्ट हैं, तो क्यों हम ये, जब हमने सिंघम 2 के वक्त या शोले के वक्त ऐसे सवाल नहीं उठाए कि आप तो देखिए हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, तो आज क्यों ये सवाल उठा रहे हैं? आज हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये फिल्म टेररिस्टों के अगेंस्ट है, तो लेट अस अपलॉड द फिल्म rather than trying to find something to say कि somehow ये फिल्म किसी और एक इशारा कर रही है। क्योंकि हमने बनाते वक्त बहुत केयर रखी है कि हम किसी भी धर्म, किसी भी कम्युनिटी, किसी के भी अगेंस्ट नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उन परपेट्रेटर्स के अगेंस्ट हैं और उन्हीं को हमने दिखाया। That is what this film is about. This film is about these girls. This film is about those 3 girls whose lives were destroyed. उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये उनके लिए है। बाकी सब हमारे अपने तरीके हैं ना एग्री करने के। That's most welcome in democracy. Everybody has a right to disagree. But सवाल क्या है कि हम कभी ये सवाल नहीं उठाते ना। किसी और फिल्म में आपने ये सवाल उठाया? हर फिल्म का विलन किसी ना किसी रिलीजन से तो बिलोंग करता ही है। ऐसा तो कोई विलन नहीं होगा ना जो किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करता। आपने कितनी बार ये सवाल उठाए हैं, लेकिन आज ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? हम लड़कियों की ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? That is a bigger question जो हम सबको जवाब देना चाहिए। Hi Ripple, Kiranjit this side. Hi from Delhi Passport. फिल्म की कहानी अच्छी लगी, सबको फिल्म अच्छी लगी। मेरा सवाल ये है कि ये फिल्म की कहानी ज़्यादातर ISIS और टेररिज्म पर है। आज जब आपने ये जो एक्टिविटी रखी है, इनसे हमें इंट्रोड्यूस कराया है, आपने उन लोगों को सामने क्यों नहीं लाया, या ला नहीं सकते या ला नहीं पाए हैं जो एक्चुअली ISIS और टेररिज्म का शिकार हो चुकी है? उसमें ऐसा है कि हम उन तक पहुंच नहीं सकते। जिस लड़की की कहानी शालिनी, वो अफगानिस्तान की जेल में है, और नीमा का टेस्टिमोनी हमने फिल्म के एंड में रखा है। गीतांजलि के माँ बाप का टेस्टिमोनियल भी हमने रखा है। लेकिन वो लड़कियां जो कहीं चली गई हैं, उन तक पहुंचना हमारी रीच के बाहर है। मैं एक पॉइंट ऐड करूं, हमारी उद्देश्य ये नहीं था कि कोई एक एग्जीबिशन करके लड़कियों को दिखाने की कोई इरादा नहीं था। यहाँ पे कुछ ह्यूमैनिटेरियन कहानी बोलने की कोशिश की। गीतांजलि की जो माँ बाप की, जो आपने फिल्म की एंड में देखे हैं, वो माँ बाप भी आना चाहते थे हमें सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो लोग ऐसे दूरी में रहते हैं, उनको इधर आने में 3 दिन लग जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट शहर से भी वो लोग बहुत दूर रहते हैं। बात ये है, कितने लोग, हमने कहीं नहीं बोला कि 50,000 लड़की, 70,000 लड़के आईसीस में चले गए। उसके लिए आज भी हम क्या बोलेंगे, अलग अलग दुनिया की जगह से पेपर भेज रहे हैं, प्रूफ। आज भी एक प्रूफ आया कि 42,000
लड़कियों को आईसिस ने इम्प्रेग्नेंट की है। आज आए हैं, मतलब पायनियर न्यूयॉर्क करके कोई मैगजीन से। सो बात ये नहीं है कि हमने कोई सेलिब्रेशन करना था, कोई शो एग्जीबिशन करना था, हमें 3 प्यारी बच्ची की कहानी बोलना था और वो कहानी हमने बोले और उस कहानी के थ्रू एक बहुत बड़ा इशू को हम टारगेट किए। ये श्रुति अगर अभी बोलना शुरू करेगी ना, रात हो जाएगा, आप सुन नहीं पाएंगे, सिर्फ आंसू बचेगा, एनर्जी खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा। अगर श्रुति अपने कहानी बोले, अगर अखिला अपने कहानी बोले, चित्रा अपने कहानी बोले, तो बात ये है, मुझे दुख इस बात की हुई, हमारी देश में आज भी अगर गरीब को रोटी देने की बात करें ना, तो कोई सवाल उठाएगा, इसका कोई जरूर कोई उद्देश्य है कि गरीब को रोटी दे रहा है। पॉलिटिक्स ने बहुत बुरे कर दिए हमारी मन को। इन तीनों बच्ची की जो हमारी फिल्म में थी और यहाँ पे जो 26 साल की बैठी है, इनकी दर्द किसी को नजर नहीं आते हैं, यानी कि हमारी पॉलिटिकल मंशा मन में आता है, which really pained us. Hi, this is Mohan from the Times of India. I'd like to know about these 7,000 women that the ashram is saying that they've been brainwashed or indoctrinated. How do you determine that they were doing something which was anti-national or anti-human? Are there any police records? How do you determine and how do you find these girls? Secondly, Kerala is also reputed as one of the most religiously diverse states. So when you're doing something like this, how do you ensure that it's not leading to some sort of vigilantism? That was a good question. I'm sorry, I didn't get your name. Mohua from the Times of India. Okay, that was a good question, Mohua ji. So, if we have to talk about the 7,000 people that we have brought back, it's first of all not just women, it's both men and women. How many had actually joined the ISIS? देखिए, ये 26 लोग में कोई भी ISIS की ओर नहीं गई है, मगर उसके भी ज़्यादा वहाँ नहीं गए, मगर हमारा संरक्षण नहीं, हम नहीं संरक्षण दिए तो हम आचार्य समाज और आचार्य जी हम सब लोग मदद नहीं किए तो उनका साथ भी ऐसा ही होता था। might have happened something with their life, with our life. They've been rescued. They were on their route to something very, very sinister, and they've been rescued from there. That's what she's saying. Hello, Vipul sir. Vipul sir and Sudhir sir. My question is to you. This is Russell Silva from PTI. While I understand what you all are trying to highlight in the movie, and you all have previously also stressed that this film, this story, is against terrorism and the terror network, and it doesn't target any single community. But having seen the film, I must bring light to certain points, like in Kerala, when we see this movie, there is not a single redeeming person from the Muslim community shown in the movie. Like in the scene in the mall, half the mall is attacking the girls, and the other half the mall, the people are just standing and doing nothing. Also, the scene where Ada comes back to the person's house after getting impregnated to the guy's house, there are posters on his walls saying how nationalism is dangerous, Muslims will get forward. There's a poster showing the American flag and an Islamic flag attacking each other. The question is the iconography. While we understand that the message, maybe that's not the intent, but it's the iconography that stays with people long. By saying that you understood that this film is not about any religion, not Hindu, not Muslim, not Christian, anybody. It is about 3 girls who represents the sufferings of thousands of girls, which already I think convincingly they said, and if you have any other question, you can ask them. Now coming to the iconography and the characterization. We were not here to do the balance act, that thoda Hindu ko अच्छे दिखा दे, thoda Muslimanों को अच्छे दिखा दे. This was not our film. We wanted to tell the story the way it happens. Each and every word being spoken, each and every visual being shown is correct, and how far it is correct you can cross check with them. Number 2,
Number 3, our film is on terrorism. Now, the sinister plan of terrorism is been hatched against the world. Not only India, Europe is suffering, America is suffering, Australia is suffering. Now, in other countries, they have separated the terror network. When it comes to their state, the opposition and the party in power are together. Terrorism is on the one side. But unfortunately, in my country, that is been said that terrorism has no religion. But when it comes to Kerala, when we have started talking about terrorism, immediately people started talking about the religion. I think you know that the terrorists, how they misuse religion. In the name of Islam, the way Islam is being every day been smashed in Syria, Yemen, I don't think you need the example from Kerala to understand that how Islam is being misused in the world. So, I think we have done the service to the religion, Islamic religion, to tell people that your religion is being misused. So you be concerned, and you will be asked, you will be surprised to know we are getting mails and messages. You can see it in the public Instagram and Twitter in the messages. The people who are abusing from the day our trailer was being released till the film is released. In these 10 days, we were flooded by abusive messages. One girl from Kerala, 21 years old girl, wrote, "Sorry bhaiya," that was her language. "Sorry bhaiya, I have abused you last 10 days to defend my religion. After watching the film, we realized that you have done the service to the nation." And every patriotic Indian, you can go and check, I did not delete. Patriotic Indian should see the film to know that how danger we are in. So I think this iconography that is democracy does not work, or whatever you have seen in the set, it is deliberately used. The radicalization of Kerala men are reached to the dangerous level. Few days back a video came, a small 9-year-old boy sitting on the shoulder of his father was shouting the death for the Hindus and Christians. So this radicalization in Kerala has reached to that level. So I think without taking any name of any religion, we have done the service to the nation and for all these girls. I take your concern, but I would have felt more comfortable if you would have spoken about the pain of the girls. You are worried about some iconography. You're not worried about these girls getting in such a bad trap. And that's your first question. So that's the most important thing that you felt. I feel we are doing disservice to these girls and every victim by focusing on that side rather than focusing on the girls. Vipul, hi, this is Bala here from Vijay. Hi, the wonderful film. Vipul, my question is, I've seen Human. I think that was a great web series which opened up a lot of issues in the medical world. And today you are also, Wild, which has exposed issues of society, the ills of society. So as a filmmaker, you're taking great steps towards not commercial success only, but also creating social events. When you embark on your projects today, is there a conscious thought in you today to do something, not just money making, but also doing such projects which will create more awareness, like they said, after the movie they got calls from everywhere. As a filmmaker, do you feel that conscious thought in your head? I think what is very important is when Sudipto केरला स्टोरी बनाने के पीछे जो रीज़न था, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, सुदीप्तो दादा ने लड़कियों के साथ और आशा विद्या समाजों के साथ मिलके जो रिसर्च की और जिसकी बदौलत ये फिल्म बनी, आज हम उस इनिशिएटिव को आगे ले जाना चाहते हैं. जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रोटेक्ट द डॉटर्स, दैट इज़ द इनिशिएटिव. ये हम सबका फ़र्ज़ है कि हम ये आश्रम कंप्लीट होने दें. यहाँ पे कम से कम 300 लड़कियों को सुरक्षा के एनवायरनमेंट में रहने की सुविधा भी होगी, अपार्ट फ्रॉम ये सारे जो कोर्सेज चलाने वाले हैं.
तो हम हमारी फिल्म की ओर से एक छोटी सी शुरुआत करना चाह रहे हैं। वी वुड लाइक सनशाइन पिक्चर्स एंड द एंटायर टीम ऑफ केरला स्टोरी would like to start this process by starting a small contribution facing nowadays. This conversion is the biggest problem that we know because we had experienced it. We are witnessing several such cases in daily basis. So हमारा आश्रम का एक ज़रूरत कितना है, हमारा आश्रम विद्या समाजम का ज़रूरत कितना है, हम जो कोर्स सीखकर सनातन धर्म की ओर आए हैं इसका ज़रूरत कितना है, ये समझकर, इसका नेसेसिटी समझकर हम इस काम के लिए हमारा पूरा जीवन आगे रखे हैं। और वी आर रेडी टू स्पीक जस्ट बिकॉज nobody should be there like Shruti or like Dr. Anakha, like Chitra Chechi or Vishali and Adra or like Akhila and all. So we should guide, we should expose what happened in our life. Then only people can understand what is happening and around. So we are the people, we are the only people who are saving this type of people who became witness for the ideological or love trap jihad or whatever types of jihad or conversion. This is the only institution which is focusing to bringing back those who misguided. Thank you very much, Shruti. और भी आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो ज़रूर कहिए। एक बहुत बड़ी बहस चली थी, 32,003, 26 लड़कियां यहाँ हैं और अभी इन्होंने खुद कहा 60,000 का नंबर एक संस्था का। तो मुझे लगता है कि अब ये 32,003 इन सबको, हम तो सैकड़ों लड़कियों से खुद भी मिल चुके हैं, तो 3 के नंबर की तो कोई बात ही नहीं थी। हमारी फिल्म 3 लड़कियों की कहानी लेके बताती है, इसलिए वो 3 का नंबर है। 3 के नंबर का एक्चुअल जो केरल में हो रहा है उससे कोई वास्ता नहीं है। ये कहानी 3 लड़कियों की कहानी के थ्रू इन हज़ारों लड़कियों की कहानी आप तक लेके आई है। और बहुत दुख भी हुआ कि मीडिया के कुछ लोगों ने इसमें उनका साथ भी दिया, हमें डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। हम कोई नहीं है, लेकिन इतनी सारी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, उनका साथ ना देकर इस फिल्म को छोटा या झूठा साबित करने की गंदी कोशिश करना, ये कितना सही है, यह हर एक को अपने आप को आईने में देख के जवाब देना चाहिए। 7,000 का नंबर अभी इन्होंने कहा और ऐसे बहुत सारे आंकड़े लेके हम बहुत जल्दी आएंगे और सारा खुलासा करेंगे 32,000 का भी। उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमें क्रिटिसाइज किया, क्या वो अपना रुख बदलते हैं, लेकिन वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन लड़कियों की लड़ाई को वीक मत करिए, आप इन लड़कियों के साथ अन्याय मत करिए। दैट इज आवर रिक्वेस्ट, दैट इज व्हाट वी वांट टू सी। प्लीज आप में से जो भी बोलना चाहे बोलिए। जैसा विपुल शाह जी ने कहा कि नंबर 32,000 या 3 की नहीं है, जैसा हमारे एक्सपीरियंस में सिंस 1999 टिल डेट वी हैव बीन सक्सेसफुल। वो वहाँ एक सुरक्षित और अच्छे माहौल में अपनी ज़िंदगी जी सके। सबसे पहले मैं इनसे आमंत्रित करूँगा और ये आपको बताएंगी अपनी ज़िंदगी के बारे में भी और उस आश्रम के बारे में जो बनाना कितना ज़रूरी है और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। प्लीज़ आइए और अपनी बात लोगों तक रखिए। Namaste everyone, I am Shruti. I am a lifetime worker at Ashram Vidya Samadhan, which is situated in Kerala, Trivandrum right now. And how I could associate with Ashram Vidya Samadhan, I would like to say first. 10 years back,
I was victim of ideological conversion. And it was Arshvidya Samajam and Acharya Shri K.R. Manoji, the founder and director of Arshvidya Samajam, who brought me back to Sanatana Dharma.